Today I would want to introduce documentation to you, or Google Docs to you, or MS Word to you. Okay. So as I was telling you that when you are working in an office, there will be scenarios where you will be working on your technical stuff, on your day-to-day troubleshooting tasks. And on the other days, there would be a case where you have received some information from a customer in the form of a document, or you have received in form of Excel or a presentation and so on, or maybe you have to share some document to your customer. Now, essentially, whenever you start working on a document, there are multiple organizations who have provided you with the feature of creating documents. In Google, this is known as Google Docs. If I will go to Microsoft Office, it will be like MS Word. So if you have Office on your laptops, you can open MS Word and it will open a document for you. So this is what you talk about Microsoft Word. Again, these are not simple tools. A Word editor can be a notepad or a word pad. Those two are also available on your systems. But Microsoft Word is a very rich software application. It provides you with multiple options. You can publish things from here and so on. And it has got a very elaborate way to format and customize the way it looks. So we would be covering both of these, editing a document on Microsoft Word, as well as editing a document on Google Docs. Google Doc is again a very a simpler implementation of MS Word. So Google has come up with this. Again, they have also added multiple options now. As the time progresses, Google is also adding many more features. But essentially, at the end of the day, what you want to achieve is you want to create some documents. So I'm just showing you what all kind of documents people prepare here. So whenever you will go here, you can find some templates. So you can have a project proposal, you can have a brochure, you can have newsletter, right? And all these kind of configurations are possible. So for example, if I'm opening this newsletter, so this is something that is prepared on Google Docs only, and someone has shared this as a template, right? Now you can replace these things like your brand, newsletter, heading, photograph, and then you can keep on adding pages. So I'm just telling you this so that you can have some idea of what all is possible. Just to start with, first of all, this is a document. So I will write this is a document. I can just simply write here. Now, whenever you start writing a document, you start with a what you say default format of text, which is a combination of size, font, bold, whether it is a bold or not, whether it is underlined or not, and so on. So by default, again, Microsoft or any other tool will also provide you default formats. Say, for example, I want to make it a title. So I will simply click on this and it will become large and it will become bold. And you can also see this doc summary on the left hand side. Again, I have an option to either disable or enable this summary. So for example, I go here, I disable this, so I will not see this. But it will, because it helps us. So just to see, now this is the title of the document. Now the second part can happen is, so this is heading 1. As for any document, you will say that this is my title. And then whenever you start a new section, you would want to put a heading of that section, right? I can go here and I can select apply heading 1. So this becomes heading 1. Now, if you will see this document, you will see that this may be the title, right? So this entire thing is title and maybe this is subtitle or something. So you see it's a different format, right? It's not similar to ours. So normally what happens is every organization will have their own templates. Depending upon the organization, they can choose to have these documents in their own templates. For example, if I will again go to template gallery, okay. So this is the meeting notes, for example. The annual board meeting, and this is the title. Again, this is a very different format. This is heading 1. Again, this is a very different format in a reddish color and smaller characters. So what you can do is you can actually create your own templates, or you can choose to format these. So for example, I will go here.
So just imagine in my document there are two sections and I've got two headings now. These are both heading one. So I can say that, okay, my first heading is the skills. And then I come here and then I will say Java or maybe JavaScript or maybe Python, for example. Now, if I have to, I can also choose to just end it like that. But say, for example, under Java, I further want to break it. Okay, so join the class, purchase a book. Now, see what will happen is this is my heading one, and now I will select Java and I will put heading two here. So it becomes a subsection of heading one. And now I can choose to put these in list, right? So if you will see, this is how it will look like. This is the title, and then skills is the heading one, and then I can see, okay, under heading one, there is a heading two. So basically, you are grouping your sections into different sections. So this is the significance of heading. Now coming back to the point where I was saying that you can format your headings. So I can go here, I can say that, okay, I want a different color. It should be bold, and the font should be comfort Q. So this becomes my heading one. And I now want my all the headings in the document to be of the same format. So I will go here. I will say format options. I will say update heading one to match. So once I do this, you see this automatically changes. So wherever in this document you will have heading one, it will automatically change to whatever format you have selected. You can achieve similar things over here. So for example, here what happens is that you have these styles, right? Now you can actually modify your style in Word. So you can choose my normal text to look like this, or if I want this to be like this. So you will see the text will change. Similarly, this is default heading one. So I can modify these from here. I can choose this to be of red color or brown, dark brown color. Now, what will happen is whenever I will write something and I will select this and I put heading one, it will automatically change to heading one. So MS Word provides a similar options, but the way to use them is different. And obviously, it is much more user friendly if you will think about it. It has got multiple options of setting up your formatting, but you can use both, right? In fact, this has got a lot many more things as well, but we will come to them later. Now, this is about your sections and your heading. Similarly for title, now two things that are very important in a document is that something called header. Now, header is something that comes on the top of your document, and similarly, there is something called footer. Footer is again something that comes at the bottom of a document. Now, either you can choose to have footer on every page. So, for example, you see any number of pages I will add. So, whatever I have put in header and footer, it will automatically come on every page. Okay. So, normally what happens is that people put the company's details, or I can design my document in a way. Say, for example, right now it is looking at a very bland document. Okay. I can I can go here and I can add a drawing here, and I can create a new drawing. Now this is one more tool that Google is providing. I will show the same thing to you over there. Now you can simply go here, you can add a shape. Say for example, I want to just add a highlighting row. So I will select this, I will select this, and this becomes my shape. So you see now every document at the top, you will get this line. Now over here, again, the same thing can happen here. You have a header section. You can choose to write header over here. And then from here, you have to use close header and footer. Similarly, you can go here. So you have header footer over here. And again, you close it. Again, you see now the options that you're using. So it's saying different first page. Someone can choose that, okay, my first page should look different from the remaining pages. So I will select on this. Now I will go here. You see the header has gone because I am again configuring it. So I can simply select a shape. In Word, you get very many options, right? You can select this kind of a screen. Also, you can change shape. There is something called 3D effects over here. So you can give a 3D effect. Now these options might not be there in Google Docs. So now what happens is that my first page looks like this. And now as I will enter, you see, the second page doesn't have this image, but it has the header that we decided
earlier. So this is something that we decided. Here I can put anything, UPSPIR, education. So this will keep on coming on every page, but not every page will have this particular drawing that I put here. So this is the concept of different first page. Now you might have seen in some documents that you get a page number. So for example, I go to this footer section. तो मैं जाऊंगा यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा होगा पेज नंबर्स का, राइट? अब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि आपके पास एक 4 ऑप्शन है, आप टॉप राइट पे रख सकते हो, आप बॉटम राइट पे रख सकते हो, राइट? तो मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ये, और फिर यहाँ पे मेरे को एक और चीज दिखाता है वो पेज काउंट। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जिसको मैं ऐसे लिखता हूँ पेज 3 of 4, right? And I will just simply click on this. So see, this becomes page 4 of 4, this becomes page 3 of 4, this becomes page 2 of 4, and this page becomes page 1 of 4. अब मैंने ये चूज किया है कि मैं फुटर में लगाऊं, सिमिलरली आप इसको हेडर में भी लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग और भी चीजें ऐड कर देते हैं, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा, तो टैब करके यहाँ पे मैंने कॉपीराइट कुछ लिख दिया, any kind of message or restricted something, whatever you want to write, you can write here and this becomes it. तो इस तरीके से भी चलता है। इसमें फिर और भी कुछ ऑप्शंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपने एक इमेज इंसर्ट कर दी। Say for example, I will try to put my logo here. So I want to insert my logo on this document so that anyone who sees this particular document will know that okay, this is from UPSPIR education. So I will go here, I will find a logo, and I will just try to put it. So you see this becomes like this. Now I can resize it. Now you see there are all these options coming. This is called inline, this is called wrap tags, this is called break tags, this is behind tags, this is forward text, right? So now if I am writing some text here, so this is not looking good, right? Now I will have to choose an option that makes it looks good, right? So I will say that okay, you make it inline, and you take it to the right, and I can say all image options, right? So I can just do it like this, right? So now it becomes a proper format where I can see my logo on the right hand side and some text, whatever I wanted to put over here. So I can even simply write name of the document, and now I can format it. I can make it bold, I can increase its size, I can change its color to again color that we all will like, maybe this one, and that's it. So now this is coming on every page of the document. And then now we move to certain, and similarly we have put our footer over here. Again, if you want that you want to add some design over here, in a similar way you can do it. Yes, so sir. I can choose to add a drawing from here, new drawing. I can simply select, for example, मुझे बहुत बड़ा सा band add करना है, and I want to give it a bluish color. Okay, so I will just do this, save, and this. Now this is coming like this, and now I will say behind text. So now this is what my document will look like. And few organizations will have certain format, you just use that and you build upon that. So now since this is the title of the document, something that is required is you want to align it centrally on the document. Maybe you just don't want any text here, so easily you can go here and insert a page break. So as soon as you do it, this page only has got this content and the remaining content goes to the next page. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ये भी फॉलो कर सकती हैं कि जितनी भी हेडिंग हो वो सारी हेडिंग हमेशा नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो, राइट? हेडिंग 1 फॉर एग्जांपल। आई कैन अगेन गो हियर, मतलब यहाँ पर पेज ब्रेक है, कंट्रोल एंटर, तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट से भी कर सकता हूँ, कंट्रोल और एंटर प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड पे तो ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ फॉर्मेटिंग योर नॉर्मल टेक्स्ट। अगर आप ये देखोगे, ये टेक्स्ट के चारों तरफ आपको एक बाउंड्री नजर आ रही है, राइट? दो स्किल इतना सा कम साइज का है, बट जो मेरा पूरा कर्सर सिलेक्ट किया हमने ज्यादा करा है उसने, राइट? तो देयर इज समथिंग कॉल्ड स्पेसिंग। तो यहाँ पर आप देखोगे तो कस्टम स्पेसिंग में जाऊंगा मैं, तो ये लाइन स्पेसिंग होती है। लाइन स्पेसिंग तो होती है कि एक लाइन के बाद दूसरी लाइन के बीच में कितना स्पेस होगा, राइट? और एक है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो यहाँ पे इसने बोल रखा है कि बिफोर 20 एंड आफ्टर 6, यानी कि अगर हम स्पेस जो लाइन स्पेसिंग है उसको 1, उसका कोई भी एक मेजर होगा, मेजर मुझे अभी नहीं पता है, बट से फॉर एग्जांपल इट इज 1 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर या फिर पिक्सल के अंदर होगा वो। अब वो बोल रहे हैं कि जैसे ही ये वाला हेडिंग खत्म हो,
ये वाला पैराग्राफ खत्म हो, उसके बाद आप, मैंने बोला 20 स्पेसेस ऐड कर दो, सो इट विल ऑटोमेटिकली डू इट लाइक दिस। नाउ इसका एडवांटेज क्या होता है? नाउ सपोज आई रिड्यूस दिस, आई से दैट ओके आई डोंट वांट कस्टम स्पेसिंग एट ऑल। मैं यहाँ जाता हूँ, इसको मैं 0 कर देता हूँ, राइट, एंड आई आल्सो रिमूव दिस, एंड ये भी शायद स्पेसिंग थी। अब मैं इसके बाद जब लिखना स्टार्ट करूंगा तो इट विल जस्ट स्टार्ट लाइक दिस। अब आपको ये भी दिख रहा है, ये भी क्यों दिख रहा है? कस्टम स्पेसिंग के कारण नहीं दिख रहा है ये बस। तो आपके जो हेडिंग है और आपका जो टेक्स्ट है उसके बीच में कोई स्पेस ही नहीं रहा। अब मैं दोबारा से जाकर के यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, स्किल 2, ये भी हेडिंग 1 ही है। तो यू कैन सी दैट यू, जो डॉक्यूमेंट दिखना चाहिए किसी को वैसा नहीं दिख रहा। हमें तो ऐसा दिखाना है ना डॉक्यूमेंट, जो हमने यहाँ पे सैंपल देखा था, राइट? दैट इज व्हाई दीज थिंग्स आर यूज्ड। अब जैसे मैंने आपको ये वाली चीज दिखाई थी, नाउ इफ आई विल सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज अ नॉर्मल टेक्स्ट। अब इस नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर आप देखोगे 1.15 स्पेसिंग के ऊपर है, कस्टम स्पेसिंग में इसके पास कुछ भी नहीं है। अब अगर इसको मैं तीनों को सिलेक्ट करके, I will do this like this. So I will select this. I will go here. I will do it single. अब मैंने उसकी स्पेसिंग कम कर दी। अब देखना क्या करूंगा मैं यहाँ पर जाकर के फॉर्मेट ऑप्शन में जाकर के अपडेट नॉर्मल टेक्स्ट टू मैच कर दूंगा। तो ये सारों के सारे, ये सब जितना भी नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसकी स्पेसिंग कम हो जाएगी, राइट? अब ये डिपेंडिंग होता है कि आप कैसा दिखाना चाहते हो। ये बहुत पास पास सब कुछ हो गया, राइट? बहुत गिच पिच वाला डॉक्यूमेंट लगेगा। I can go here, I can choose to like simply go and do 1.5, right? तो अगर यहाँ पे पूरी पूरी लाइनें लिखी हुई होती, let me just take a paragraph from somewhere. जो मैंने अभी टेक्स्ट कॉपी करा है ना, right? It will come with certain format of its own. उस वाले डॉक्यूमेंट से उनने कुछ फॉर्मेट लेकर आया और उन्होंने यहाँ पे पेस्ट किया है। अब if I don't want to keep this format, right? मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट हो, तो अगेन एक ऑप्शन तो ये होता है कि आप यहाँ जाते हो और पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग कर देते हो। द सेम थिंग यू कैन अचीव विद कंट्रोल शिफ्ट वी। तो अब ये मैंने टेक्स्ट कॉपी कर लिया है, इसमें कोई फॉर्मेट नहीं आया है। अब सपोज करो इसी को मैंने अगर सिंगल रखा होता तो कुछ ऐसा दिख रहा होता है, विच इज नॉट रीडेबल। आपको एकदम से अजीब सा लगेगा देखने में। तो इसलिए दिस इज व्हाई यू विल यूज समथिंग कॉल्ड अ 1.15 स्पेसिंग, या फिर आप और भी अच्छा दिखाना है तो 1.5 स्पेसिंग, कभी कभी डबल स्पेसिंग भी यूज करते हैं। जनरली लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह के अंदर दे प्रेफर डबल स्पेसिंग की, बहुत क्लियरली सब कुछ दिख रहा हो। बट अगेन दिस इज योर चॉइस, हाउ यू वांट टू प्रेजेंट इट। एट द एंड ऑफ द डे इट शुड लुक नाइस, इट शुड लुक रीडेबल, एंड दैट इज द व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। अभी इसके अंदर में और भी एक चीज, जैसे इसके अंदर भी एक और चीज है। अब मैं कस्टम स्पेसिंग में जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये डबल स्पेसिंग में चल रहा है। अब मैं अगर इसके बाद कोई हेडिंग स्टार्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको जाके हेडिंग 1 कर देता हूँ, इसकी मैंने हटाई थी ना, सपोज ये एक और पैराग्राफ है, राइट? अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। नाउ अगेन दिस इज नॉट द राइट वे अ डॉक्यूमेंट शुड लुक लाइक, राइट? आपके एकदम से एकदम बाद दूसरा टेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है, फिर ये भी नहीं पता लग रहा कहाँ पे हेडिंग आ रही है। तो दैट इज वाई वो जो हमने कस्टम यूज किया था कि हमारे जो हेडर्स हैं, वो हेडर्स के ऊपर कुछ ना कुछ गैप होना चाहिए। तो 20 या 10 का गैप, अगेन एज पर योर लाइकिंग यू विल अप्लाई, सो दैट देयर इज अ गैप। ना ये चीज आप लोग ऐसे भी अचीव कर सकते हो, मतलब यहाँ पे एंटर मारा, राइट? आपने दोबारा यहाँ पे जाके दोबारा से एंटर कर दिया, यू कैन स्टिल अचीव इट लाइक दिस। बट अगर ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता तो आपको हर जगह जाकर के मैनुअली करना पड़ता। लेकिन अगर आप ये वाले ऑप्शंस यूज करते हो जो मैंने आपको अभी बताए हैं, राइट, ऑल दीज ऑप्शंस, तो आपको हर जगह जाके दोबारा दोबारा नहीं करना पड़ेगा। आपने एक बार ही अपने पैराग्राफ के साथ सेट कर दिया, तो जहां पर भी आप वो वाला फॉर्मेट सेलेक्ट करोगे वो चलेगा। अच्छा, एक चीज और, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसका 1.5 स्पेसिंग रखा था, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज करता हूँ, ये मैंने 3 पैराग्राफ ऐड कर दिए यहाँ पे। अब ये सारा 1.5 स्पेसिंग के अंदर है। तो अगेन आप देखो कि यहाँ पर ये वाला नेक्स्ट जब स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ, तो समझ में ही नहीं आएगा किसी को। यू वांट सम स्पेस बिटवीन, जो लाइन स्पेसिंग होती है उसके सिवाय देयर इज समथिंग कॉल्ड अ पैराग्राफ स्पेसिंग आल्सो। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ, लाइन स्पेसिंग कितनी है, और मैं कह रहा हूँ कि मेरे को बिफोर चाहे रखो ना रखो, बट पहले आप 6 जरूर रख दो। तो लाइन स्पेसिंग मेरी 1.5 की रहेगी, बट पैराग्राफ के बाद मेरे पास एक स्पेस आ जाएगा 6 का। तो मेरे इन दोनों चीजों के बीच में फर्क हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे जाके कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे फॉर्मेट अपडेट नॉर्मल टेक्स्ट टू मैच कर दूंगा।
तो जहां जहां मेरा नॉर्मल टेक्स्ट था, जैसे यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट था, तो इसके नीचे भी वो 6 आ गया। मुझे हर एक सेक्शन को जाके अलग फॉर्मेट नहीं करना पड़ा। सो दिस इज वन पार्ट। नाउ ये सारी ऑप्शंस आप यहाँ पर भी एप्लीकेबल होती हैं। तो यहाँ पर भी आप जाके देखोगे तो ये आपका वो सेक्शन है जो मैंने आपको बताया था, राइट। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग की बात कर रहा है, यहाँ पे इनने 3.0 तक दे रखा है। फिर यहाँ पे एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, हेड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस के अंदर ये सारा का सारा आ गया। इसमें आपको थोड़ी बहुत चीजें और मिल जाती हैं, लाइक यू कैन इवन प्ले विद इंडेंटेशन। तो मैं अगर कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ और मैं इसको जाकर यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं सपोज लेफ्ट इंडेंटेशन को तो द टेक्स्ट मूव्स टुवर्ड्स राइट। तो ऐसा होता है टेक्स्ट के अंदर कि कोई चीज आप लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहते हो। अब इसके नीचे हो सकता है मैं जो लिख रहा हूँ, तो आई वुड वांट टू स्टार्ट विद अगेन आफ्टर सम टैब। तो टैब देखें, इसके बाद फिर ऐसे भी आता होगा कभी कभी लिखना कि और एक टैब से स्टार्ट हो। नाउ अगेन मैं इस चीज को मैनुअली अचीव कर सकता हूँ, हर लाइन पे जाकर के टैब मार मार के आगे पीछे कर सकता हूँ। अदर थिंग इज कि मैं सीधा इंडेंटेशन यूज कर लूँ। मैंने किसी को सेलेक्ट किया, इंडेंटेशन यूज कर लिया। देन कमिंग ऑन टू लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। तो अगेन यहाँ पर कुछ होता है कि आप फर्स्ट लाइन को कितना करना चाहते हो। तो समवन विल वांट कि मेरा फर्स्ट लाइन कम इंडेंट हो, सेकंड लाइन ज्यादा हो, तो वो सब होता है। स्पेसिंग की बात ही आई चुकी है। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी प्रोवाइड कर देता है, बट एसेंशियली स्पीकिंग वर्ड के अंदर यू गेट मोर ऑप्शंस, मोर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस देन मे बी एनी अदर टूल अवेलेबल इन द मार्केट। तो एक लास्ट चीज कवर कर देता हूँ। वर्ड में इसका बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। So there is something called smart art and clip art and वर्ड आर्ट। तो अगर आपको इस तरीके से कुछ भी लिखना है तो हमें बहुत सारी ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है वो। यू कैन मॉडिफाई देयर कलर्स। इसके अंदर फिल कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई कैन चूज दिस। तो यहाँ पे एक आउटलाइन कलर अलग दिख रहा है, तो आई कैन गो देयर एंड चूज अ डिफरेंट आउटलाइन कलर। सेम ही कर लूँ, देखो कैसा लगेगा। ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं। फिर मैं इसको बड़ा बड़ा छोटा कर सकता हूँ। तो मेरे पास ये सारी ऑप्शंस होती हैं यहाँ पे। यू कैन प्ले विद देम एज मच एज यू वांट, अगर कभी यूज करना हो तो। फिर एक चीज जो थी जो मैं दिखाई रहा था वो होता है आपका यहाँ पे ये स्मार्ट आर्ट भी बहुत यूज होता है। इसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड चार्ट्स और लिस्ट वगैरह अवेलेबल होती हैं। एंड आई कैन से मे बी आई कैन से निखिल, आई कैन से जिग्नेश, आई कैन से कृष्णा, आई कैन से प्रसाद, सो फॉर एग्जांपल एंड सरिता। यू सी अब ऑटोमेटिकली यहाँ पर बॉक्सेस बढ़ते चले जा रहे हैं, मेरे को बढ़ाने नहीं पड़ रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है इसको फॉर्मेट करने की। फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू चेंज कलर्स। मैं इसको ऑल्टरनेट ऐसे कलर्स में रखना चाहता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे दिखाना चाहता हूँ, लाइट दिखाना चाहता हूँ, इस तरीके दिखाना चाहता हूँ। और इसके अंदर तो 3D भी आ जाएगा, राइट। नाउ इस सब के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ रहा है, सब कुछ मुझे प्री डिफाइंड मिलता चला जा रहा है। नाउ यू सी दीज लेआउट्स कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ लिस्ट लेआउट कि आपको सिर्फ टॉपिक्स लिस्ट करने हैं। जैसे मैंने प्रसाद मैंने क्रॉन टैब के लिए बोला कि आप 5 चीज लिस्ट कर दो, तो आप अपने इनिशियल पार्ट में जाकर के डॉक्यूमेंट के अंदर आप लिस्ट बना सकते हो। यू कैन चूज एनी ऑफ दीज ऑल्सो। सो ऑल दीज आर अवेलेबल टू यू। ऐसे यहाँ पर प्रोसेसेस के लिए है, तो आप प्रोसेस डिफाइन कर सकते हो। साइकिल, जहाँ पे साइकिल की चीज दिखानी होती है, राइट, तो वहां पे आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हो। So this is what we have covered today. We have covered how to put header and footer. What is the significance of header and footer? What are the different formatting styles for text? How can you format your document?